Chalo. So we'll start a new topic today, which is called torque. Torque. Okay. So we studied about linear and angular, right? Linear and rotational motion. Mein. Tell me, what are things variables we studied? Displacement, angular displacement, velocity, angular velocity, acceleration, that too tangential acceleration, alpha, angular acceleration. Next, mass. Here, rotational mein, what we call moment of inertia, right? And next parameter we are studying about force, nothing but torque here. Rotational analogy of force is nothing but torque. Torque के वजह से only the body will move in a circular path. Okay, torque, rotation, turning effect of force is called torque. Okay, so we'll see क्या क्या है इसमें. देखो torque का, it is a rotational analogy of force. Rotational analogy of force. It measures the turning effect of a force about a point or axis. About one point or about that axis, we will try to calculate always torque. Torque, simply they will not find torque. Torque किसके about चाहिए? That is important. किस point के about torque चाहिए? That is important for us. So torque को अदर नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं टॉर्क को. सो इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल टॉपिक, कुछ नहीं. तो लीनियर में फोर्स बोलते हैं, एंगुलर में टॉर्क और अमाउंट ऑफ टर्निंग बोलते हैं. ओके, टेल मी, सपोज मान लो देयर इज ए वन नट इज देयर, वन स्पैनर इज देयर. एक थोड़ा एग्जांपल देगा तो समझ में आ जाएगा. ओके, यू टेल मी दैट amount of turning or torque depends on what are the factors? Amount of turning. फॉर्मूला याद है ना आपको? आता है ना फॉर्मूला वगैरह टॉर्क का? चलो फॉर्मूला फॉरगॉट. ओके चलो. अमाउंट ऑफ टर्निंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये स्पैनर देखा होगा ना आपको, घर में स्पैनर रहे तो गियर देखा होगा ना, स्पैनर नट टाइट कर रहे हैं. So tell me, this depends on force you applied, the amount of turning force. Tell me, more the force, more the turning or not? ज्यादा force धक्का दिया तो more the turning. So more the force, more the amount of turning. Okay. Next, it depends on which position you are applying a force. मतलब this distance को we call as R, moment arm बोलते हैं. Okay. So देखो, here if I apply सेम स्पैनर को कॉर्नर में अप्लाई, टर्निंग इफेक्ट किस में ज्यादा है? किस में ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट? कॉर्नर वन. मतलब मोर द मूवमेंट आर्म, मोर द टर्निंग इफेक्ट, राइट? सो इट डिपेंड ऑन आर आल्सो, डायरेक्ट रिलेशन ओनली आर, मोर द टर्निंग. सो दैट्स व्हाई यू नो हमारा घर में यो एनी डोर्स में, आपका डोर में हैंडल किधर रहेगा? कॉर्नर में रहेगा और हिंज पॉइंट में रहेगा? टेल में. कॉर्नर में. व्हाई? इट इज इजी टू टर्न. सेम थिंग, एक बार कभी भी कारपेंटर आए तो निकाल के अंदर हिंज के पास रखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द डोर. सो टर्निंग इफेक्ट इज लेस. सो इट डिपेंड्स ऑन मोमेंट आर्म. दिस इज मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म बोलते हैं आर. सो मोमेंट आर्म किधर से लेने का? एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द डिस्टेंस वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है ना, इसके अबाउट रोटेटिंग, राइट? सो एक्सिस ऑफ रोटेशन to the distance where the point F is applied, that is called arm, moment arm, R से depend on. And it also depends on, suppose मान लो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला उसी से आएगा. ओके, so suppose मान लो I applied a force like this, F at the angle theta, right? Now take the components. F का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? F cos theta. And इसका perpendicular component is F. Now tell me, which component of force is making the spanner to move? Which component of force?
F sin theta. हाँ, आपको लग रहा है ना एफ साइन थीटा ऐसे धक्का दे रहे हैं, इस फोर्स की वजह से द टर्निंग इफेक्ट इज हैपनिंग. ओके, एंड दैट मींस इनडायरेक्टली इट इज डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा. साइन थीटा पर डिपेंड हो रहा है, थीटा पर डिपेंड होगा, और यू कैन टेल थीटा पर डिपेंड होगा. सो इसलिए आपको फॉर्मूला आ गया, टॉर्क डिपेंड्स ऑन दिस थ्री फैक्टर्स ओनली. सो आपको फॉर्मूला आया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, द टॉर्क का फॉर्मूला. R is the momentum, F is force, and theta. So experimental say they will got the formula directly. RF sin theta is the formula. So torque will calculate about one point only, any point fix करने का. क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से नहीं करने का, एक पॉइंट के हिसाब से करके you have to solve all the numericals from that. Simply they will not tell torque. Torque about this point चाहिए or something we should find. Sir, I'm done. Okay, formula is what? Tell me. RF sin theta. RF sin theta is the formula, right? now देखो here नट है, here span है. इसको अदर वे ऑफ राइटिंग देखो. सपोज F is I applied like set angle like theta I told you. instead of component I told you F cos theta, and instead of component is F sin theta. F cos theta I can call this as F parallel component. देखो axis के about parallel है ना? And this component axis के about what? Perpendicular. I call this as F perpendicular, and this is R, right? No, perpendicular, F perpendicular, or this is F parallel. F parallel का कुछ लेना देना नहीं है. It is not producing any torque, right? F sin theta. So that means I can write like this. This formula को I can expand R into F perpendicular. Very famous formula, torque का formula. Into F perpendicular. Theta पर depend नहीं चलता है क्वेश्चन में. आप suppose they'll give this is 3 centimeters. The force is 5 newtons. सर थीटा किधर है? सब नहीं है. थीटा 90 होगा, बट नॉर्मली क्वेश्चन में आपको R into F perpendicular नथिंग बट टॉर्क. Okay, simple. R into F perpendicular. Okay. Now this is a scalar form में. And torque is a vector, right? Because force is analog of torque is analog of force, right? So torque is a vector quantity. So vector form में कैसे लिखेंगे? We write torque is equal to R cross F. R cross F is a formula. If you expand A cross B expansion किया तो mod A mod B sin theta, right? So same thing. So R F cos theta, and direction is important. Direction is important. कैसा theta कैसा लेने का direction समझो, then we'll start numericals का. Right direction is given by right hand thumb rule. Okay, right hand rule बोलते हैं. Curl the fingers from R to F. Thumb points the torque. Okay. Suppose मान लो you have one object is there, one body is there. It is fixed about this origin. Okay, I am applying a force like this F to the angle theta. Okay, R is what? From here to here, right? The axis to the point where the force applied. So torque का direction कैसे आएगा देखो.
आर को, आर तो इधर तक ओनली, यू यू इन आर का डायरेक्शन को एलोंगेट करो, आर का डायरेक्शन यू एलोंगेट लाइक दिस, ओके, दिस इज आर डायरेक्शन. नाउ कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम आर टू एफ. सी समझ में, आर तो बट यू विल एक्सटेंड along this direction आर को. Okay. Now curl the fingers along from R to F. The thumb indicates the direction of the torque outwards. Okay. So that means you have to understand, very important. आपको क्या करने का, थीटा कैसे लगेगा? You take, you go radially outwards, and measure anti-clockwise direction theta. Measure theta anti-clockwise direction. That is a theta we have to take. So R का direction के along extend करो, R से F curl the fingers, and torque indicates the direction of, there is a direction of torque. Okay. Now देखो, copy it right here. Okay. Now देखो. So do I need to copy the graph? ये theta learn कर रहे हैं वाला, ये लिख लो. Okay. Now here question is, why F cos theta is not producing torque? Tell me. Why F cos theta is not producing torque? So it's passing through the axis, like लिखो. passing This is through very the important. circle. Whenever any force passing through axis of rotation, there is no torque. लिखो. Since F cos theta passes through axis of rotation, that's why no torque. So torque is a vector quantity R cross F, and scalar form है RF sin theta, or R into F perpendicular. This is a formula of torque. Okay. Now here आपको समझ में आने का, the torque is coming outwards, right? Outward torque की वजह से the body is rotating anti-clockwise or clockwise? Outward torque in this case में anti-clockwise direction. Similarly, inward torque will produce clockwise direction. So simple way में I told you, dimension से लिख लो. Newton meter is the SI units, and dimension is IM L square T per minus 2, right? This is the formula, because R into F, R is L, right? L into F का you know already, ML square T per minus 2 dimension. Now आपको ये समझ में आने का, हाँ, सो वो पॉइंट में बोलता हूँ, वो लिख लो, हो जाएगा. कौन सा लास्ट में करेंगे, वो वाला कौन सा? वेन एवर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको द बॉडी आउटवर्ड टॉर्क विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इनवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट विल सी. सो समझे, द कंपोनेंट ऑफ पासिंग थ्रू एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई टर्निंग इफेक्ट टॉर्क इज 0 इन दिस केस, राइट? नाउ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, विल टेल मी. टॉर्क इज इक्वल टू R cross F. So when you expand R F sin theta, theta is the angle between R vector and F, right? And R I can call as R into F perpendicular. चलो. And you know क्रॉस प्रोडक्ट को भी कैसे करने का, राइट? मैट्रिक्स फॉर्म में, याद है ना, वेक्टर्स में. चलो करो. फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट द ऑरिजिन. देखो अबाउट द ऑरिजिन, वन पॉइंट के रेस्पेक्ट में वी आर कैलकुलेटिंग, which acts on a particular whose position vector also given to you. खत्म, वेक्टर फॉर्म में दिया, यूज टॉर्क वेक्टर का एंड सेल आंसर. all JEE Main questions.
Sir, minus 17I plus 19J minus 4K. Perfect. Next, a force and position vector. The torque about origin is yes. 2022. J means R cross F. Sir, Yeah. minus 10I cap plus 10J cap plus 5K cap. I cap wrong. Minus 2, minus 8 आएगा, right? Minus 2 minus 8, हाँ. Oh, so minus 10. हाँ. Minus 10 I cap, right? You told minus 10 I cap, you told. Correct. Minus 10 I cap plus 10 J cap plus 5K cap. Yes, correct. Sure. The magnitude of torque I want of 1 kg is 2.5 Newton meter. The given torque only. Force is 1 Newton. And distance from the origin 5 angle is asking. Easy. Sir, 30 degrees. Radians में it is pi by 5 by 6. 6. Yes. Okay. And normal multiplication, you know, right? I, J, K. याद है ना? I cross J is how much? I cross J is plus K. K. K cross I is plus K. K. उल्टा गया तो J cross I means Minus K. minus. Okay. So when you're going anti-clockwise वाला, it is minus. Okay. Serial order में plus है. करो. 2006 J means. I'll give options in vector form में दिया. The given this is y. This is y. X, Z. Which option? Sir, I'm just getting FI cap. No. Option नहीं है ना. See, force sum all में minus F K cap. Okay.
एंड पोजिशन वेक्टर कैसा आएगा? 1 को -1 मीन्स इट इज आई कैप माइनस J cap. जे कैप, खत्म. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. हाँ. So I minus J cross F is minus F K cap. So I'll multiply both. I cross K is how much? I cross K Is is how minus much? J. Minus J. Minus of minus plus. So F times of plus J cap. So minus into minus plus. Okay. J cross K is I only. So F I cap. So F common le to I plus J. So answer is C. Okay. सुनो करो दूसरा. So R of t, alpha is given, beta is given, constant से mass is given. The torque with respect to origin at 1 second is torque is how much? So उसमें F is not given, R is not given, R is given, right? R is given, but F is not given. Method understood, right? Torque is R cross F. R तो दिया है इस वन, ठीक है. अल्फा values are given at t equal 1 second, you will get R value. Okay. F value we do not, but F equal to ma. Acceleration find करो, displacement is given. How to find displacement? दो बार differentiate करने का, right? To get try करो.
Sir, 50 K cap. ऑप्शन Oh, options are given. आर वेक्टर कितना है? 10 by 3 I cap plus 25 J cap. 25 जे कैप. Hmm. वाई 25 जे कैप? आर वेक्टर टेलिंग 10 by 3 I cap plus no not 25 J cap. 5 J cap is there. Okay. So B square, so over there. Okay. Beta is 5 only. Okay. हाँ ठीक है. एंड इसका F is F is 2 I cap. J cap नहीं आया. Sir, A value J cap will go away first time only, no sir, because B square doesn't have T only. V does not have T. वही V is there. A में रहेगा T एक. Sir, 1 T will be there, sir. 6 6 alpha. alpha T plus 2 beta, हाँ. right? Sir, why 2 beta, sir? 2 आएगा ना? Sir, नहीं 2 देखो. also 1 no? ठीक है. R is equal to अल्फा टी क्यूब आई के प्लस बीटा स्क्वेयर जे कैप, राइट? सो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? अल्फा बाहर 3t स्क्वेयर, राइट? प्लस बीटा स्क्वेयर कांस्टेंट है ना? ओके. बीटा Sir, स्क्वेयर टी रहेगा क्या? हाँ सॉरी. बीटा स्क्वेयर टी स्क्वेयर है. लिखो. रॉन्ग. ये टी स्क्वेयर है. दैट्स मिस्टेक आया. ना करो. नो इसमें भी आएगा मेरे ख्याल से. एफ आर में भी आएगा आपको. ये बीटा ले लो. ये बीटा ले लो, इजी हो गया. बीटा टी स्क्वेयर ले लो. बीटा टी स्क्वेयर. नो ले लो. कितना आएगा? Sir, 15 K cap. 50. 15. अरे रॉन्ग. इस ऑप्शन में नहीं है ना. यू टुक बीटा टी स्क्वायर, राइट? सो आर वेक्टर कितना है? 10 by 3 I cap plus 5 J cap. 10 by 3 I cap plus 5 J cap. That one you got. And F vector F vector is 3 I cap. 2 I cap plus J cap आएगा. 2 I cap plus J cap. हाँ, okay, wait. Yeah. आया? Sir, minus 20 by 3 K cap. -20/3 के कैप. कुछ नहीं. ये काइनेमेटिक्स थोड़ा कंबाइन किया. आपको 2 बार डिफरेंशिएट कर एक्सेलरेशन आएगा. देन फोर्स फाइंड करने के लिए एम ए यूज करेंगे सिंपली.
we'll get in terms of I cap J cap. R also we got in I cap J cap, right? Just multiply R cross F करने का आ जाएगा. Okay. चलो. Now relation between torque, direction, and rotation. I told you before, right? Torque, direction, rotation. Tell me, anti-clockwise में क्या होगा? अगर डायरेक्शन में तो it will go anti-clockwise direction. Simply वो लिखो. That's outward page. Torque will rotate the body in anti-clockwise direction, and into the page body will rotate the body in clockwise direction. Okay, this is the direction, force, rotation and the torque relationship है. आपको लगेगा टॉर्क आउटसाइड है ना, कैसा इधर इधर घूमेगा कैसा बोलते, दैट इज अ वे आपको रिमेंबर करने का. आउटवर्ड टॉर्क विल मेक द बॉडी रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इनटू द पेज वाला टॉर्क विल रोटेट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो आउटवर्ड टॉर्क करस्पॉन्ड टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इनवर्ड टॉर्क करस्पॉन्ड टू क्लॉकवाइज रोटेशन. आपको इधर आपको देखो, एक बॉडी के ऊपर not only one force, it can act 2 or 3 forces can act. Okay, at that time वन फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं, वन फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं. सो वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशंस एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेट टॉर्क. ओके, ये समझ में देखो आपको समझ में ये वाला अंडरस्टूड, राइट? एंड द फोर्स व्हिच इज पासिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? द टॉर्क इज 0, राइट? चलो बोलो. Different forces are applied on the pivot scale. I applied F1, F2, F3, F4. These are pivoted, fixed at this point. He's asking which of the following forces will produce torque. Torque means घुमाने वाला. कौन सा force will makes the body to rotate? F is fixed है ये वाला. Fixed. जम हाँ? Sir, what is fixed? Oh, at pivoted point O. at वो. At point O is fixed. So just answer like that's it. Which force makes the body to rotate? It will create torque. Sir, F3, F2, and F4. F5 is passing through axis of rotation. That's why F5 and F1 is also passing through axis of rotation. No torque produced. So torque produced is only F2, F3, and F4. Right? Net torque. I told you, you have multiple forces can act in the on the body में. आपको net torque चाहिए. Net torque का फॉर्मूला क्या होगा? Simply τ1 plus τ2 plus τ3 वेक्टर. नेट टॉर्क फाइंड करने का. एंड टॉर्क को साइन कन्वेंशन यू हैव टू फाइंड. साइन कन्वेंशन यू हैव टू यूज. साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को वी शुड टेक एज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को वी शुड टेक एज नेगेटिव. याद रखने का. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को we should take torque as positive and clockwise को torque as negative, and combine करेंगे, simply add करने का torque का. ओके, आपको लगेगा मतलब कौन सा force is making clockwise, कौन सा force is making the body to rotate in anti clockwise, we can know from that direction. Suppose मान लो, small example I will give. The disc pivoted at this point. इसका सेंटीमीटर से 5 centimeters है, and applying 10 newtons force. And AB 5 centimeters है. I am applying the body to rotate in 20 newtons. Okay. Now tell me what is the net torque acting on it. Now tell me, this is a fixed about this point, right? You tell me this force is making the body to rotate in clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. And this body is making the body to rotate in the Anti-clockwise. No. Why? ये फिक्स्ड है ना, ये पुश करे तो ये घूमेगा ना. Okay, which that's direction also is clockwise. clockwise. So net torque will be आपको simply नेगेटिव में आएगा. -30. So -30 है. Why -30? Oh wait, force into. नहीं R into F perpendicular, right? R into F perpendicular. R into F. So कितना होगा net torque will be? So आपको clockwise को should take negative, right? So -50 R into F perpendicular. ये वाला -100. So it is -150 Newton meter. So एक body के ऊपर multiple forces can act. That time net torque we have to calculate by taking the sign conventions only. तो simply addition किया तो सभी क्लास गया.
है ना? या चलो न्यूमेरिकल्स करो। एक बॉडी के ऊपर वन फोर्स इज 8 न्यूटन एक्ट हो रहा है, इस बॉडी के ऊपर 4 न्यूटन, इस पॉइंट में ऐसा एक्ट हो रहा है 6 न्यूटन, वन बॉडी को 9 न्यूटन एक्ट हो रहा है एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर सभी में। आई आस्किंग द नेट फोर्स दैट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्सेस अबाउट सेंटर ओनली। आई टोल्ड राइट अबाउट वन पॉइंट वी विल कैलकुलेट ऑलवेज, अबाउट सेंटर में आई वांट। एंड विथ साइन कन्वेंशन नेट टॉर्क मैं तो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच डायरेक्शन द बॉडी टू रोटेट। ये 4 न्यूटन को बॉडी को किस तरफ रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस में? 4 न्यूटन इस धक्का दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका इसका टॉर्क प्रोड्यूस वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला 8 न्यूटन ऐसे धक्का दे रहा हूँ। move clockwise. वेरी गुड, बिकॉज इफ आई टेक द कंपोनेंट्स इसका तो कुछ एक्ट नहीं होगा, ओनली इसका आएगा, सो दिस इज क्लॉकवाइज। एंड इसका Sir, it won't दिस इज move. पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट, so it will not produce any turning effect, torque is zero। इसका It will about move this axis clockwise. clockwise, so उसके accordingly you should take the sign conventions and solve। Sir, 1.8 कितना? clockwise. वन 1.8 पॉइंट, clock. हाँ यस करेक्ट, फाइनली नेगेटिव में आएगा ना, सो इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, नो फाइंड करो, दिस अ पिवोटेड पॉइंट है 20 सेंटीमीटर दूर में एफ फोर्स है 40 सेंटीमीटर में एफ स्केल है मान लो। आई वांट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट।
इन टर्म्स ऑफ एफ में आएगा. So this force is making the body to rotate in clockwise, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. So R into F perpendicular यूज करो. So 2 by 5F. 2 by 2 by 5F. 2 by 5F. Why? डायरेक्टली क्लॉकवाइज. R into F perpendicular फ्रैक्शन क्यों आएगा? 20 into F minus 20 into F. This is 40 into plus 40 into F. Sir, Simply add but करो. they said centimeters. So if Oh I do, no, these are centimeters only. so I should do by 100 for everything, no? R into F perpendicular, right? Okay, by 100 किया तो कितना आया? आपको फ्रैक्शन में आया टोटली, बट ऑप्शन में दे गिवन सेंटीमीटर्स में ओनली डायरेक्टली. So if सो it's कितना है? in centimeters, then into 120, 40F. हाँ, 40 F इज आंसर. ऑप्शन के हिसाब से कर दो. ओके, चलो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ये किया तो टॉर्क का डन, कुछ नहीं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन किया तो पूरा टॉर्क हो जाएगा. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई होने का, देन ओनली वी कैन से इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो एंड रोटेशनल भी आ गया तो नेट टॉर्क इज आल्सो जीरो. दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ओके, देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने का एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने का. इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then only we say it is called static equilibrium. So net force should be zero. Net force is zero means indirectly acceleration of center of mass is zero. I told you. Force is zero with the center of mass का acceleration will be zero. That means velocity of center of mass is constant. याद है ना? We done in center of mass में. Velocity of center of mass is constant. Similarly, rotational motion net torque is zero means alpha is zero. That means omega is constant. मतलब indirectly velocity is constants. Torque is zero means velocity is becoming constant, angular and linear. Okay. So static equilibrium का very important है. आपको एक condition आएगा, उससे all questions you can solve. एक छोटा सा method I'll tell you. So two conditions must be satisfied in static equilibrium. Question में they will not mention static equilibrium. Object rest में balancing हो रहा है बोले तो that is called static equilibrium. So net static translation equilibrium will be there and rotational equilibrium also will be there. Then now देखो under static equilibrium में आपको very important torque about any point of the system is zero. Very important. ये sentence से many questions you can solve. Torque about any point is zero. मतलब net torque about any point आपको सिस्टम में रॉड में किधर भी ले लो, कौन सा पॉइंट भी ले लो, that is equal zero. That means indirectly I can tell simply clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Simply equate these two, we'll get whatever the question they asked. Torque about any point is zero. See, again, don't use sign conventions here now. When you're equating, again, don't use sign conventions, anti-clockwise, clockwise को directly equate clockwise torque पूरा एक जगह में लिखो and anti-clockwise पूरा एक जगह में लिखो, खत्म हो जाएगा. Net, see, if you bring all one side, that means sign convention use करके आया ना, again, don't do sign conventions. So, whenever you question में आपको equilibrium में है, that means object is balancing, कुछ balance हो रहा है, that means it is in static equilibrium. That's why simply net torque is zero. And दूसरा net force तो भी zero है ना. दोनों condition sometimes helpful होगा. Okay, A भी होगा sometimes. Net force is zero means आपको simply question में upward force equal downward force equal upward force equal to downward force, this side force equal this side force, ऐसे करने का. Net force हम लोग पढ़ा ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में, upward force to downward force equal करके उससे equation, इधर equation sometimes helpful होगा दोनों.
2 equations will help. So that's why net force भी 0 करने का, net torque also 0 at about any point. This is very important. About any point आपका मर्जी है, but उस point के respect में totally you have to calculate. Okay, torque we will calculate about one respect point के हिसाब से. Okay, चलो आइडिया स्टार्ट करेंगे इसका. चलो, it's two small kids weighing 10 kg and 15 kg. मतलब if you multiply weight you got as 100 newton and 150 newtons are trying to balance seesaw and total length is 5 meters. So from here to here total length is 5 meters. Okay, with the fulcrum at the center में fulcrum is there, balancing point is there. If one of the kids is sitting at the end, the other should sit. You tell me, अगर दोनों कॉर्नर में बैठे हुए तो whether the beam will balance? No, because एक पर्सन मोटा है, पतला पतला है ना, so we cannot get. तो इसलिए एक पर्सन कॉर्नर में बिठाएंगे which is पतला पर्सन को, and मोटा पर्सन को थोड़ा x डिस्टेंस दूर में I will make him to sit so that it should balance. He is asking what is the value of x. X value कितना है, मतलब बैलेंस होने का मतलब it is in equilibrium, right? We are able to understand that it is balancing about equilibrium. That means simply about one respect point में simply equate clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. So this is body is कितना 100 newtons force and ये वाला 150 newtons force. And torque about which point will take? Torque about any point. So which point will take? कितना? 5/3. Answer है. About this point you took? About this point you took? Yeah. So answer is 5/3. That is how much? 1 point. It will be 1.6 bar. Yes, correct. So clockwise torque is equal, and this force is making the body to rotate in the anti-clockwise. This body is making to rotate in the clockwise. So R into F perpendicular is equal to R into F perpendicular. But you will get the value of x. But the answer is approximately 1.7 meters. खत्म. ऐसा क्वेश्चन भर के है क्वेश्चंस पूरा. आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज दिस ओनली, टॉर्क का कॉन्सेप्ट ओनली. ओके, हाँ ये करो. A man of mass 60 kg, मतलब center of mass से 60 kgs is there, is doing push-ups. Find the normal reaction force exerted by the floor on each hand and each foot, which is the distance 0.4 meters and 0.8 meters respectively from the center of the mass. Center of mass से ये हाथ is 0.4 and center of mass से ये foot is आपको 0.8 meters. He's asking find the normal reactions of foot and of hand ka normal action. Okay, I want normal action of the foot and normal action of the hand. Do. So he's in equilibrium. He's not moving from one place to other place. He's doing equilibrium. He's in equilibrium. So equilibrium में what is the condition? Tell me. Equilibrium में net force is 0 and net torque is 0. Right? So net force is 0 means first condition में क्या है? Net force is 0. That means upward forces is equal to downward forces. Tell me upward forces कितना है? This is mg, right? mg is 60 g. So 600 newtons, right? So upward force को downward force first equation आएगा आपको. upward force कौन सा है? nf plus nh hands का feet का I'm telling is equal to downward force is 600 newtons. This is the first equation. Sir, NF is 200 and NH is 400. आंसर आ गया आपको. हाँ, super यार. Now what is the condition which about which point you're taking torque का? About center of mass, right?
सो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, सी ऐसा नहीं कि इधर भी ले सकते हैं टॉर्क अबाउट इधर भी ले सकते हैं, आंसर विल बी सेम बिकॉज देयर इन इक्विलिब्रियम. सो क्लॉकवाइज टॉर्क, सेकंड इक्वेशन क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. सो क्लॉकवाइज टॉर्क वाला कौन सा है, which is making the body to rotate in the clockwise direction? Sir, both will be same, sir. No, why? This is making the body in the upward direction, right? Like one direction. ये तो देखो इस तरह फैक्टर है ना. So क्या होगा? Simply equate. So 0.8 into NF is equal to 0.4 into NH. Now equate these two equations, substitute, and you'll get the answer. So answer is, tell me, NF is how much? NF is 200. Yes, and NH is 400. 400. Khatam. This answer. So always two equations should be satisfied. Not right? In a given figure, a uniform plank of length 6 meters. Pura plank ka length is 6 meters and weight is 200 newtons. Rest horizontally on the two supports. Okay. Okay. This plank है, ये वाला plank है. उसका weight is how much? 200 newtons. Rest horizontally on the two supports with 1 meter of the plank hanging over the right support. देखो right support में 1 मीटर में हैंग हो रहा है, मतलब रिमेनिंग लेफ्ट है, ए पार्ट इज 1 मीटर. ओके, हैंगिंग ओवर द राइट सपोर्ट. टू व्हाट डिस्टेंस कैन ए पर्सन हु वेट्स 800 न्यूटन्स, इसका वेट इज 800 न्यूटन्स, कितना डिस्टेंस तक जाएगा ओवर हैंगिंग बिफोर इट जस्ट बिगिन टू टिप, बिफोर इट जस्ट बिगिन टू टिप. मतलब मान लो एक्स डिस्टेंस तक गया मैक्सिमम, उससे गया ज्यादा गया तो इट विल टिप, इट विल कम अप. ओके, सो एक्स इज टेलिंग टू फाइंड, x is saying to find, and उसका weight कितना दिया है, weight of the plank downwards is 800 newtons. 200, sir. 200 newtons, right? No solve. So since center of mass वाला center है ना, so this is 3 meters and this complete is 3 meters, this will be 2 meters. So you can take torque about any point is 0, any point. So which point लेने से advantage है for us? एनी पॉइंट लो, कौन सा पॉइंट लेगा? सो अबाउट दिस पॉइंट ले लो, हो जाएगा. So 0.5. 0.5 आंसर. सो इसमें व्हाट आर द क्लॉकवाइज टॉर्क्स वाला कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक्स वाला कौन सा है? सो देखो 200 इन will be 800 and 200 800 वाला, anti-clockwise. दिस इज, सो 200 into 2 is equal to 800 into x. तो क्या कर रहा ना, we got the x as answer is 0.5, correct. करो. A beam of weight W supports a block of weight W. So beam का weight है W and block of weight है W. The length of the beam is L. Okay, total length of the beam is L. And the weight is a distance L by 4. A weight of the block is distance from L by 4 from the left end of the beam. The beam rests on the two rigid supports at the ends. At the ends में two rigid supports are there. Find the reactions of the supports. मतलब normal action of the supports we want.
तो इसका भी W है, इसका भी W है, और नॉर्मल एक्शन चाहिए ना, सो इसका Na Nb, राइट, Na Nb चाहिए। विच पॉइंट लिया तो अच्छा है, टेल में विच पॉइंट लिया था आपको, अच्छा टॉर्क अबाउट सी Center. स्टैटिक, नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ले सकते हैं, एनी पॉइंट ले सकते हैं, बट अंडरस्टैंड करो, टॉर्क अबाउट ये सेंटर लूंगा, प्रॉब्लम क्या है बोले तो आपको इसका भी इक्वेशन आएगा, ये भी एन ए एन बी में आएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाए तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, राइट, यू टेक अबाउट वन पॉइंट, इस पॉइंट में लिया तो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट एन ए, टेल में एन ए विल प्रोड्यूस एनी टॉर्क, No, sir. नो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको एक डायरेक्ट आ जाएगा, वन स्टेप में आ जाएगा, एन बी आ जाएगा, समझ आ रहे हैं, सो ऑलवेज टेक द वन वेरिएबल को जीरो करने के लिए उधर ले लो, हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। So since it is static equilibrium, net force is zero and net torque about any point, either point कौन सा ले रहे हैं, A ले, about A is equal to zero. That means clockwise torque is equal to anti-clockwise torque So then about you A. get NB into L is equal to 0 now. Second equation, huh? First equation, tell me what is the first equation? So NB into L is equal हाँ to. ठीक है, इसमें बोलो about torque का, clockwise torque वाला कौन सा है? Sir, are we going to consider weight also? हमारे वो भी प्रोड्यूस about this point is producing weight, right? Okay. About fixed point. So this is making the body to rotate in the anti-clockwise direction. These all are making the body to rotate in clockwise direction. So इसका बोलो W into L plus W into L by 2 is equal to इसका anti-clockwise direction is NB into L. देखो Na निकल गया. That is the advantage of having about one fixed point. So L cancel करो, L. So W by 4 plus W by 2 कितना होगा? तो 3W by 4 आया. So 3W So by 4, substitute. 5W by 4. So we know the F net force is Na plus Nb is equal to 2W, right? So substitute करो तो 2W minus 3W by 4 कितना होगा? Na is equal to 2W minus 3W by 4. So it is 5W by 4. आया? So आपको अगर इधर नहीं लिया तो क्या होता था, अगेन Na Nb में आएगा, अगेन टू इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. So always take about any point, ऐसा पॉइंट ले लो so that one variable getting cancel. Okay. नहीं करो. A uniform rod of length L and mass M is hung from the strings of equal length from a ceiling as shown in figure. Determine the tensions in the string. देखो इक्वल लेंथ का ले रहे टेंशन T1 और TA TB is asking TA TB is how much. So इसका मास है सेंटर में समवेयर मास है, that is mg, right? एंड इसका लेंथ कितना है, that one you have to calculate. So सेंटर में तो L/2 है, इधर से L/2 है टोटल. So this will be how much? L/2 minus L/4. So this will be L/4. Okay. Now to calculate दो कंडीशन यूज करो, नेट फोर्स इक्वल 0, नेट टॉर्क इज 0.
talk about now center में ले लेता है, any point you can take, your wish. Sir, is TB 2 mg? What 2 mg? Answer, huh? Yeah. T A na? TB. No, wrong. What is the upward net force equal to 0 means upward force downward force. So TA plus TB is equal to mg, first equation. So torque about which point you're taking now? A. A point, take it. So this is producing in the clockwise direction. So mg into L by 2, and this also producing in the anti-clockwise direction is equal to TB into how much distance? L by 2 plus L by 4 is how much? 3 by 4. 3 L by 4. So L cancel, 2 cancel. 2 3 TB is 2m3. So substitute here mg by 3. mg by 3. Yes, TA is mg by 3. खत्म. सो ऐसा मॉडल करने का. विल लेफ्ट विथ वन मोर मॉडल है, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे. कौन सा है? आपको लैडर का एक लैडर जैसा क्वेश्चन देगा. वो इट इज ऑन द वॉल में ऐसे बैठेगा. वो बोलेगा टॉर्क का क्या क्या फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नॉर्मल एक्शन, सेम मॉडल ओनली. क्लॉकवाइज सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज लगा के सॉल्व करने वाला है. वो हो गया तो कंप्लीट टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम डन. ओके. So then kinematics and dynamics this only. Kinematics means आपको circular motion का alpha, that one only we have to do kinematics का, and using equation of motion we have to solve. आपको dynamics means आपको आगे आपको आने वाला है like tau is equal to I alpha, work energy theorem. ऐसा same thing only we are using all the variables now. Okay.